ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഷേവ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം. ഇതെന്നാണ് മറ്റേ സ്കിൻ ഡിസീസിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള സാധനം വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ മരുന്ന് കഴിച്ചു, വൈകുന്നേരം ചായ കുടിച്ചു. ഇപ്പോൾ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ 13 2024 19:12 എന്നുവെച്ചാൽ 7:12 PM ഓഫ് വൈകുന്നേരം 7:15 ആകാറായി. 13/7/2024. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ്. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ അത് പല കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടോക്ക് ഫുട്ബോൾ HD, ടോക്ക് ഫുട്ബോൾ ET, അതുപോലെ പല ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഇത്രയും. ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 100 മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ. ഇനി സെമി ഫൈനലും തേർഡ് പ്ലേസും ഫൈനലും കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കി. അപ്പോൾ അത്രയും കാലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടേക്കണം 100 മാച്ചിൽ ഇതുവരെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെമി ഫൈനലിൽ ഇനി 4 മാച്ച് കൂടെ ഉള്ളൂ. 100 മാച്ചിൽ ഞാൻ 52 മാച്ച് കണ്ടു. എല്ലാം രാത്രി ഇരുന്ന് ഉണർന്ന് രാത്രി ഇരുന്നാണ് ഞാൻ മാച്ച് കണ്ടത്, എല്ലാ മാച്ചസും. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി ഇട്ടേക്കണമെന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ മറ്റേ സെക്കൻഡ് മാച്ച് ഡേയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് മാച്ചിൻ്റെ തേർഡ് മാച്ച് ഡേയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, റൗണ്ട് ഓഫ് 16, ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ, സെമി ഫൈനലിൻ്റെ അല്ല ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വരെയുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കാണാത്ത മാച്ചസിൻ്റെയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ട മാച്ചസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം, മാച്ച് ഡേ 3 മുതലുള്ള. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇന്നും കൂടെ എന്തൊക്കെയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ടോക്ക് ഫുട്ബോൾ ET HD ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം ആദ്യമേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 7:15 PM ഓഫ് ജൂലൈ 13, 2026. 13th July 2026 19:14 PM ആയി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 7:14 PM ഈവനിങ് ആയി. ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ ധ്രുവ് ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ധ്രുവിനകത്തെ രാം മന്ദിർ സ്കാമീസ് വെർസർ ദാൻ യു തിങ്ക്, അതാണ് നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്നത്. ഇന്നൊരെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇട്ടേക്കണത്. ഇന്ത്യാസ് എക്കണോമി ഈസ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ, റുപ്പി ഈസ് കൊളാപ്സിങ്. 22 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇപ്പോൾ സമയം 7:15 PM 7:15 PM ഓഫ് വൈകുന്നേരം 7:15 PM ഓഫ് 13th July 2026. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കേൾക്കാം. 7 लाख करोड़ रुपीस, इतना पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले 6 महीनों में इंडिया से बाहर निकाल चुके हैं. मतलब ग्राफ में यहाँ दोनों बार्स के बीच में डिफरेंस देखो कितना है. इंडियन रुपी एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी रही है. एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं और आंकड़े दिखाते हैं कि दूसरी तरफ उनकी रियल सैलरी जो हर साल बढ़नी चाहिए वो घट रही है. But we must prepare for the worst. Be ready for tough times. गुजरात के सूरत शहर में एक छोटे से घर में एक पिता अपनी 2 बेटियों को समझा रहा है कि अगले महीने से उनका स्कूल बदल जाएगा. अब उन्हें प्राइवेट नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना होगा. इस आदमी का नाम है अल्पेश भाई. कुछ साल पहले तक इनकी जिंदगी एक बहुत ही बढ़िया सक्सेस स्टोरी थी. अल्पेश का परिवार गुजरात के एक गांव में खेती करके बस किसी तरह गुजारा करता था. लेकिन फिर अल्पेश सूरत आ गए, जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब है. यहाँ ये एक डायमंड फैक्ट्री में काम करने लगे और कुछ ही समय बाद इनकी सैलरी 35,000 रुपए तक पहुंच गई. गांव से आने वाले कम पढ़े लिखे आदमी के लिए ये काफी अच्छी सैलरी थी. पहली बार अल्पेश की जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को एक इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया. जो एजुकेशन उन्हें नहीं मिली, अल्पेश वो अपने बच्चों को देना चाहते थे. लेकिन फिर साल 2025 में सब कुछ बिखरने लगा. Tariffs imposed by the US have been catastrophic for India's diamond industry. सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में एक भयंकर क्राइसिस आ गया. डायमंड बिकता नहीं, अभी सबके ऊपर पड़ा है, पूरा मार्केट के ऊपर. पहले अल्पेश की सैलरी गिरकर 18,000 रुपए हुई और फिर कुछ महीने बाद उनकी फैक्ट्री ने अपने 60% वर्कर्स को निकाल दिए. उन्हें भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया. इसके बाद अल्पेश काम ढूंढने निकले तो इन्हें कपड़े ढोने का काम मिला, सिर्फ 12,000 रुपए की सैलरी पर. आज अपनी बेटियों को इन्होंने प्राइवेट स्कूल से निकालकर वापस सरकारी स्कूल में डाल दिया. और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है दोस्त, जब मोदी सरकार कह रही है कि इंडिया दुनिया की
फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। कागजों पर इंडिया की इकोनॉमी 8.2% की स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन असलियत क्या है यहाँ पर? इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के बयान के कुछ ही महीनों बाद की बात है। 10 मई 2026 हैदराबाद में हो रही एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों से अपील करते हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स पोस्टपोन कर दो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, वैसे ही जैसे कोविड के टाइम पर किया था। यहाँ तक मोदी ने कुकिंग ऑयल भी कम इस्तेमाल करने की अपील कर डाली। हर परिवार खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। पर इस सब के पीछे की वजह बताई गई कि हमें किसी भी तरह से फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। विदेशी मुद्रा बचाने पर बहुत जोर देना होगा। कोई भी इंसान इन दोनों खबरों को एक साथ रखकर देखेगा तो बड़ा कंफ्यूज महसूस करेगा। एक तरफ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया बताई जा रही है, इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जनता से कुकिंग ऑयल बचाने की अपील कर रहे हैं। आइए समझते हैं जीडीपी और इकोनॉमी के पीछे के असली आंकड़े जो सरकार आपसे छुपा रही है। The Indian rupee has slipped to around 96 rupees per US dollar, making it the weakest Asian currency in 2026. मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला? नमस्कार दोस्तों, 29 अगस्त 2025 इंडिया के जीडीपी नंबर्स पब्लिक किए जाते हैं। अप्रैल से जून 2025 के क्वार्टर में जीडीपी 7.8% के रेट से ग्रो करता है। यह आरबीआई के अपने फोरकास्ट से भी 1.3% ज्यादा था। नंबर्स काफी अच्छे लग रहे थे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भी इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट को लेकर अपना फोरकास्ट 6.5% से अपग्रेड करके 6.9% कर दिया। लेकिन ठीक इसी हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन चुपचाप एक रिपोर्ट रिलीज करती है। इस रिपोर्ट में पहली बार सरकार ने इनफॉर्मल सेक्टर का क्वार्टरली डेटा पब्लिश किया, और इसमें जो लिखा था वो जीडीपी ग्रोथ की पूरी कहानी पर सवाल खड़े करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2025 के जिस क्वार्टर में जीडीपी 7.8% बढ़ा था, उसी क्वार्टर में इंडिया के इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां 9.3% कम हुई थी। पूरे इनफॉर्मल सेक्टर में नौकरियां 13.13 करोड़ से गिरकर 12.86 करोड़ पर रह गई। यानी सिर्फ 3 महीने में 27 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। और डरावनी बात यह है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, इससे भी भयंकर जॉब क्राइसिस शायद अभी भी आना बाकी है एआई की वजह से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि साल 2030 तक एआई और ऑटोमेशन की वजह से 9 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इंडिया में एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में अकेले आईटी सेक्टर में 4 से 5 लाख जॉब्स खतरे में पड़ सकती है। टीसीएस जैसी कंपनीज में हजारों लेऑफ्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अब जरा ऑनेस्टली खुद से पूछकर देखिए, अगर आपकी कंपनी को एक ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए जो एआई की मदद से आपका 8 घंटे का काम 1 घंटे में कर दे, तो कंपनी किसे प्रेफर करेगी रखना? यही असली खतरा है। एआई आपकी जॉब सीधे नहीं छीनेगा, लेकिन एआई इस्तेमाल करने वाला इंसान जो आपसे 5 गुना 10 गुना तेजी से काम कर सकता है, वो आपकी जगह जरूर ले सकता है। यही इसकी एक पॉजिटिव साइड है कि अभी देरी नहीं हुई है। इसी WEF की रिपोर्ट के हिसाब से 17 करोड़ नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। यानी सवाल ये नहीं है कि एआई जॉब्स खत्म करेगा या नहीं, सवाल ये है कि आप किस साइड पर होंगे। और इसीलिए दोस्तों मैंने बनाई एआई मास्टर क्लास, इस जमाने की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में आपको अपस्किल करने के लिए। ये 3 घंटे की लाइव क्लास है जहां मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 30 सबसे इंपॉर्टेंट एआई टूल सिखाऊंगा। इसमें एआई से रिसर्च करना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, फोटोज बनाना, वीडियोस बनाना, गाने बनाना, इवन वेबसाइट्स बनाना तक सिखाया जाएगा। ये पूरी तरीके से बिगिनर फ्रेंडली है, आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है, और 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इसे अटेंड कर चुके हैं। पिछली क्लास में 80% से ज्यादा लोगों ने कहा था कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसके अबव एंड बियॉन्ड उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अगला सेशन इसका 26 जुलाई को होने जा रहा है, और अगर उस डेट और टाइम पर आप एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं हो तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो अगले 7 दिनों तक। कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है, तो अभी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। और याद रखना, एआई सीखना आप आज पोस्टपोन कर सकते हो, लेकिन दुनिया एआई को एडॉप्ट करना पोस्टपोन नहीं करेगी। अब अपने टॉपिक पर वापस आए तो सवाल यह है कि अगर लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं, उनके पास पैसे नहीं है खर्च करने को, तो मार्केट में इतनी रौनक कैसे आएगी? गाड़ियां, एसी, फ्रिज, मोबाइल, ये सब कैसे बिक रहे हैं?
इनके लिए पैसा कहां से आ रहा है? इसका जवाब है दोस्तों सिर्फ एक शब्द, कर्ज। What will I learn for 9 rupees? Number one thing that you are going to get at 9 rupees is you are going to be a certified AI tools and AI agents expert. Because you'll be able to automate 95% of your work, you'll be able to analyze your data in just matter of a minute, you'll be able to create the EMI। से दिखा कटा हुआ तेरी औकात से बाहर है ये, और ये 100 रुपये वाला सेव नहीं है, तेरी औकात से बाहर वाला सेव है। फोन भी ले ही लिया, सुना है लो लिया आईफोन तो मेरा। कौन सा फोन यूज करते हो और आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस? iPhone 15 बट माय बैंक बैलेंस इज 0। आरबीआई के मुताबिक मार्च 2025 में इंडियन हाउसहोल्ड्स पर कर्ज बढ़कर जीडीपी का 41.3% हो गया है। 2021 में ये नंबर लगभग 36% पर था। अब इस नंबर को आइसोलेशन में देखोगे, कर्ज अपने आप में बुरा नहीं होता अगर वो घर या बिजनेस को बनाने के लिए लिया जाए, लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी थी। आरबीआई के ही डेटा के मुताबिक इस कर्ज में सबसे बड़ा 55.3% हिस्सा नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स का है, जैसे कि पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ईएमआईज और व्हीकल और एसी, टीवी, फ्रिज जैसी चीजें खरीदने के लिए। यानी लोग सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ही उधार पर चल रही है। लोग टैक्स भरते, सेविंग्स करते, क्रेडिट कार्ड से उसका खर्चा निकालते, ब्याज पे पैसा उठाते, फिर वो पैसा वापस करने के लिए ब्याज के और पैसा उठाते। पर ऐसा नहीं है कि लोग फिजूल का खर्चा कर रहे हैं, लोगों पर डबल मार पड़ी हुई। एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं और आंकड़े दिखाते हैं कि दूसरी तरफ उनकी रियल सैलरी जो हर साल बढ़नी चाहिए वो घट रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2012 में एक रेगुलर सैलरी वर्कर की एवरेज इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरी 12,100 रुपए थी। ये 2022 में घटकर 10,925 रुपए रह गई है। यानी लोगों के सैलरी नंबर्स देखोगे तो वो जरूर बढ़ते दिख सकते हैं, लेकिन महंगाई को एडजस्ट करके देखोगे तो असलियत में वो 10 साल पहले से कम कमा रहे थे। 2025 तक आते आते हालत इतनी खराब हो गई कि ये देखो, सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी जरूरतें पूरा करने के बाद दूसरी चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। बाकी 90% लोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। इस बात के मायने समझो जरा, इंडिया की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा प्राइवेट कंजम्पशन से आता है। यानी इंडियन इकोनॉमी चलती ही तब है जब आम लोग पैसा खर्च करते हैं। यही कारण है कि ऊपर ऊपर से देखने में डिमांड स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इकोनॉमी में सब ठीक लग रहा है, लेकिन असल में लोगों का जो बफर है वो कमजोर हो गया है। किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बहुत कम हो गई है। और अभी तक जो सब डेटा मैंने आपको बताया दोस्तों, जो हालत आपको दिखाई, ये मिड 2025 की थी। इसके बाद से लेकर अब तक पिछले एक साल में 3 बड़े शॉक्स आए हैं। पहला 27 अगस्त 2025, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया पर 50% टैरिफ लागू करना। इसमें से 25% जवाबी टैरिफ था और 25% रशियन ऑयल खरीदने पर पनिशमेंट थी। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका इसलिए था क्योंकि यूएस इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने अनुमान लगाया है कि टैरिफ्स के बाद इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स 86.5 बिलियन डॉलर से गिरकर करीब 50 बिलियन डॉलर्स तक रह जाएंगे और टेक्सटाइल्स, जेम्स और ज्वेलरी, श्रिम्प जैसे सेक्टर्स में 70% तक की गिरावट होगी, जिससे लाखों नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। इन टैरिफ्स के बाद 2025 में इंडिया का स्टॉक मार्केट डेवलपिंग कंट्रीज में दुनिया का सबसे खराब परफॉर्मर रहा और रिकॉर्ड संख्या में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से अपना पैसा बाहर निकाला। 2 फरवरी 2026 को ट्रंप ने टैरिफ्स 50% से घटाकर 18% कर दी, लेकिन इसके बदले जो मोदी सरकार ने किया वो था दूसरा बड़ा झटका। ट्रंप ने कहा कि अब से इंडिया रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा और बदले में 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा के अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदेगा। And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. अभी तक 2025 में रशिया पर सैंक्शंस लगाने के बाद रशिया से जो सस्ता तेल आ रहा था वो एकदम से आना बंद हो गया और ठीक इसी वक्त आया तीसरा झटका। 28 फरवरी 2026 को ईरान वॉर। It will be totally again obliterated. यूएस और इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। फरवरी से अप्रैल के बीच क्रूड ऑयल की कीमत 58% और फर्टिलाइजर्स की कीमत 66% बढ़ गई और इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को हुआ। इंडिया अपनी जरूरत का 55% ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते मिडिल ईस्ट से करता है। अब एक तरफ अमेरिका के दबाव में आकर रशिया से ऑयल इंपोर्ट बंद हो चुका था और दूसरी तरफ ईरान वॉर के कारण मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल भी कम हो गया। अकेले मार्च के महीने में 40% कम ऑयल इंपोर्ट्स देखने को मिले। इंडियन इकोनॉमी की हालत पहले ही काफी खराब चल रही थी और इन 3 बड़े शॉक्स के कारण
पूरी इकोनॉमी डगमगाने लगी। इसका असर सीधे आपके किचन पर भी पहुंचा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी सिर्फ 60 रुपए, लेकिन असली क्राइसिस ये था कि कीमत बढ़ने के बाद भी सिलेंडर्स मिल नहीं रहे थे। 913 रुपयों में आने वाला एक डोमेस्टिक सिलेंडर ब्लैक में 2000 से 2500 रुपए में बिक रहा था। मई 2026 में 10 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत 7.5 रुपीस प्रति लीटर तक बढ़ा दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद सरकारी आंकड़ों में मई 2026 का ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 3.93% पर था। एक बार फिर से ऑफिशियल नंबर्स देखकर लगा कि सब ठीक है, सब चंगा सी। लेकिन जेएनयू के इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार ने बताया कि गरीब के लिए असली इन्फ्लेशन रेट 4% नहीं 60% था। Inflation for the poor people is very high. You know, if you are earning 10-11,000 rupees per month and a gas cylinder of 14 kilos, which was 950 rupees, comes for 5,000 rupees, then your rate of inflation is 60%. Your rate of inflation is not 4%. तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो 3.93% वाला आंकड़ा गलत है? नहीं, लेकिन वो अधूरा सच है। असली तूफान होलसेल प्राइसेस में दिख रहा है, जो रिटेल तक पहुंचने से पहले की स्टेज होती है। अप्रैल 2026 में होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन पिछले 3.5 साल में सबसे ज्यादा 8.3% पर पहुंच गया। उस महीने फ्यूल और पावर की होलसेल इन्फ्लेशन करीब 25% पर थी और मैन्युफैक्चरिंग की 22 में से 21 कैटेगरीज में दाम बढ़ रहे थे। यानी महंगाई फटने को तैयार है। इसी महंगाई के साथ साथ एक और डर चल रहा है, जो हर इंपोर्टेड चीज की कीमत को एक साथ बढ़ा सकता है। Falling rupee, falling rupee, falling rupee. Falling rupee. गिरता हुआ रुपया। 20 मई 2026 को इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो 96.90 पर पहुंच गया और इसी के चलते 2026 में अभी तक इंडियन रुपी एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी रही है। अब इसे सिंपल भाषा में समझें तो रुपी कमजोर तब होता है जब देश में डॉलर्स कम आते हैं, यानी कम इन्वेस्टमेंट्स और कम एक्सपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स की वजह से डॉलर्स की डिमांड ज्यादा होती है। डॉलर का खर्चा बढ़ जाता है, उससे भी रुपया सस्ता हो जाता है। अब रुपी गिरने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विदेश घूमना महंगा हो गया है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। Let's see how to convert a big 4K video file into a more manageable 1080p one, and as a cherry on top, how you can तो जब रुपी गिरता है तो यही ऑयल, फर्टिलाइजर, मशीनरी, ये सब कुछ और महंगा हो जाता है। ऊपर से रुपी की वैल्यू गिरने की वजह से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी तेजी से नीचे जा रहे हैं। जिस हफ्ते ईरान पर हमला हुआ उस हफ्ते इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 728 बिलियन डॉलर्स के रिकॉर्ड हाई पर थे, लेकिन उसके बाद के सिर्फ 4 महीनों में ये लगभग 61 बिलियन डॉलर्स गिरकर 667 बिलियन डॉलर्स पर आ गए। अब इस नंबर में से भी अगर आप गोल्ड और आरबीआई की ट्रांजैक्शंस हटा दो तो इंडिया के पास असल में इस्तेमाल करने के लायक सिर्फ 471 बिलियन डॉलर्स के आसपास बचते हैं। ये नंबर जानते हो कितना शॉकिंग है? ये 6 महीने के इंपोर्ट से भी कम के बराबर है। 2014 के बाद से इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर देश को बचाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स जो डॉलर्स लेकर आते हैं, लेकिन वो तो पहले ही जा चुके हैं। 2020-21 में जहां नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 43.9 बिलियन डॉलर्स थी, 2024-25 में वो गिरकर सिर्फ 0.96 बिलियन डॉलर्स पर आ गई। मतलब ग्राफ में यहाँ दोनों बार्स के बीच में डिफरेंस देखो कितना है। पिछले साल 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से 1.66 लाख करोड़ रुपीस निकाले। अब यही नंबर 2026 के पहले 6 महीनों में जानते हो कितना है? 2.7 लाख करोड़ रुपीस। 2.7 लाख करोड़ रुपीस, इतना पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले 6 महीनों में इंडिया से बाहर निकाल चुके हैं। अब यहाँ हर चीज सरकार की गलती नहीं है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार की अपनी बेवकूफियों ने इस क्राइसिस को और बढ़ा दिया है। मैं इकोनॉमी की बात करूं तो पहले इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता था, जिसकी पेमेंट चाइनीज युआन या रशियन रूबल्स में होती थी। इससे डॉलर्स बचते थे, लेकिन ट्रंप के प्रेशर में आकर ये ऑयल खरीदना बंद कर दिया गया है और वेनेजुएला से अब ऑयल खरीदा जा रहा है, जो बेसिकली अमेरिका खुद ही बेच रहा है और इसकी पेमेंट डॉलर्स में हो रही है। क्योंकि कुछ महीने पहले की आपने वो खबर सुनी होगी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप किया। उसके बाद से वेनेजुएला के तेल पर भी अमेरिका का कब्जा है। दूसरी बड़ी बेवकूफी ये है कि डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट लाने की जगह टैरिफ कम करवाने के लिए मोदी सरकार ने ट्रंप को जाकर ही वादा कर दिया कि इंडिया 500 बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट खरीदेगा अमेरिका से। और जैसा मैंने बताया, जितना ज्यादा इंडिया अमेरिकन सामान खरीदेगा उतना ही रुपया कमजोर होते जाएगा। अब हालत इतनी खराब हो गई है कि बात चल रही है कि इंडियन रुपी कहीं 100 रुपए पर डॉलर के पार ना चला जाए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर शमिका रवि ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? 100 तो बस एक नंबर है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा, रुपया कमजोर होता जा रहा, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल
बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इसको तो सह नहीं पाएंगे। मई 2026 में कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने भी वार्निंग दी। We have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming, but we must prepare for the worst. Therefore, it is about preparation. Be ready for tough times. इंडिया में टैरिफ और वॉर की वजह से बहुत से एक्सपोर्ट हब्स भी खतरे में आ गए हैं और यहाँ लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर को डॉलर सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इंडिया के $16 बिलियन गारमेंट एक्सपोर्ट्स का लगभग 1/3 यहीं से होता है। लेकिन अमेरिका के टैरिफ्स के बाद तिरुपुर के प्रोडक्ट्स पर एक वक्त पर कंबाइंड ड्यूटी लगभग 64% हो गई, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर बांग्लादेश के कपड़ों पर 35 से 36% की ही ड्यूटी लग रही थी। यही कारण है कि तिरुपुर के एक एक्सपोर्टर ने अनुमान लगाया कि टैरिफ्स के कारण सिर्फ इस एक शहर में ही 1.5 लाख वर्कर्स की नौकरियां जा सकती हैं। ऐसी ही हालत है शिप इंडस्ट्री की भी, जिसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। यहां से तो लोगों को ऑलरेडी नौकरियों से निकाला जाना शुरू किया जा चुका है क्योंकि कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, इसमें लगभग 20 लाख लोग काम करते हैं। ऐसी ही कुछ हालत हुई सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की भी। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये ऑलरेडी प्रेशर में थी क्योंकि इनके लगभग 1/3 रॉ डायमंड्स रशिया से आते थे। रशिया वॉर के बाद ये आने कम हो गए थे और जब अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए तो हालत और खराब हो गई। अभी तक सूरत में लगभग 4 लाख वर्कर्स की या तो कमाई कम हो गई है या उनकी नौकरी ही चली गई। मैंने वीडियो के शुरू में अल्पेश की कहानी बताई थी जिनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आना पड़ा, लेकिन कुछ परिवारों ने इससे भी बड़ी कीमत चुकाई है। डायमंड वर्कर्स यूनियन के मुताबिक नवंबर 2024 तक सूरत में कम से कम 71 डायमंड वर्कर्स आत्महत्या कर चुके थे और पिछले 12 से 14 महीनों में लगभग 50,000 वर्कर्स सूरत छोड़कर अपने वापस गांव लौट गए। यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि उन्होंने ऐसा एक्सोडस पहले कभी नहीं देखा। ऐसे खराब हालातों में दोस्तों इकोनॉमिक्स की हर एक टेक्स्ट बुक कहती है कि अब सरकार सामने आए, अपना खजाना खोले और लोगों को नौकरियां दे। लेकिन हमारी स्टोरी में यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। सरकार कुछ नहीं कर रही क्योंकि उनकी तिजोरी खाली हो रही है। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का कुल कर्ज 62 लाख करोड़ रुपीस था। 2026 में ये 197 लाख करोड़ रुपीस को पार कर चुका है। जब ये सरकार आई थी तब देश का डेट टू जीडीपी रेशियो 56 से 58% पर था, जबकि 2024 तक ये 81% तक पहुंच चुका था और अब 82% के आसपास है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट एडवाइस करते हैं कि रेशियो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 60% से कम होना चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये 40% से कम होना चाहिए। इस कर्ज का असर ये हो रहा है कि सरकार की कमाई का ज्यादातर हिस्सा पुराने बिल्स को चुकाने में निकल जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक सरकार के रेवेन्यू का लगभग 25% पुराने कर्ज के इंटरेस्ट में जाता है। इसके अलावा 28% सैलरीज में, 15% पेंशन्स में और 15% सब्सिडीज में, यानी 80% से ज्यादा पैसा पहले से ही बुक है। किसी नए क्राइसिस से लड़ने के लिए तिजोरी में ना के बराबर जगह बची है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। आगे का प्रेडिक्शन दोस्तों बेहद डरावना है। मॉर्गन स्टैनली का फोरकास्ट है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% से घटकर अगले साल 6.7% रह जाएगा, क्योंकि ऑयल का जो इंपोर्ट बिल है वो अगले साल 41% बढ़ने वाला है। अगर ये वॉर साल के आखिर तक खींची तो इंडिया के जीडीपी को 2.38% तक का नुकसान होगा और किसान परिवारों की इनकम 27% तक गिर सकती है। 2018 के ऑफिशियल रोड मैप में सरकार ने लिखा था कि इंडिया 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। इसके लिए पहले 2022 की डेडलाइन दी गई थी, फिर खींच कर डेडलाइन को 2025 तक आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन आज 2026 आ चुका है और इंडिया की इकोनॉमी $3.9 ट्रिलियन पर ही अटकी खड़ी है। एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक ये सपना अब शायद जाकर साल 2030 तक पूरा हो पाएगा। यही कारण है दोस्तों कि इन सारे नेताओं के भाषणों में $5 ट्रिलियन का जिक्र होना गायब हो गया है और अब ये सीधा 2047 की बात करते हैं। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल जर्नलिस्ट देवाशीष बासु ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा है जिसमें गलती की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। सच बात यह है दोस्तों कि अगर सरकार चाहे तो यहाँ पर पैसे बचा सकती है, लेकिन वो बचाना नहीं चाहती, सारा बोझ जनता पर थोपना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी अभी भी हर दूसरे हफ्ते किसी न किसी देश के दौरे पर जा रहे हैं। वहां जाकर उनके लिए पूरे ये नाच गाने का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन देता है इसके पैसे?
टैक्स पेयर्स। वहां जाकर ये टूरिस्ट साइट्स विजिट करते हैं, कभी कछुओं के साथ फोटो खिंचाते हैं तो कभी आराम से बैठकर नाच गाना देखते हैं। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए सरकार वेस्ट कर रही है न्यूज चैनल्स को एड्स देने में। आखिर क्या जरूरत है अपनी एड्स टीवी पर चलाने की? हर किसी ने मोदी का चेहरा वैसे ही 100 बार देख लिया है। मैं कहना चाहूंगा ऐसे मुश्किल हालातों में सबसे पहले ये एड्स और होर्डिंग्स लगानी बंद करो। अगर थोड़े बहुत ये गोदी मीडिया चैनल्स बंद हो जाएंगे तो किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर पूरी की पूरी सूरत की डायमंड इंडस्ट्री या फिर तमिलनाडु में डॉलर सिटी बंद हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान जरूर होगा। पर इस सब के ऊपर एक्सपर्ट्स एक दूसरे फ्रंट की वार्निंग दे रहे हैं। हिस्टोरिकली एल नीनियो की वजह से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और नौकरियां खत्म हो जाती हैं। और जैसा मैंने इस वाले वीडियो में समझाया था, इस साल का एल नीनियो जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये दुनिया के सबसे भयंकर एल नीनियोज में से बनने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि एल नीनियो आखिर होता क्या है, तो अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो यहाँ क्लिक करके एआई मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो एआई की फील्ड में अपने आप को अपस्किल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Completely changed how I work with music and sound effects. I can get perfect music suggestions based off my video, a written description, or another track that I upload. I'm always adjusting the lengths of songs, looping them, or selecting specific parts to include in my final mix. And these tools are available on the web player and also the plugins for Adobe IndiviDigi Resolve, so that I spend less time searching for the perfect song and more time to create. Try Epidemic Sound now. टॉप फुटबॉल एचडीയുടെ വീഡിയോ ആണ്. ടോപ്പ് ഫുട്ബോൾ എച്ച്ഡി ടോപ്പ് ഫുട്ബോൾ എച്ച്ഡി ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വേൾഡ് കപ്പ് 2026 സെമി ഫൈനൽ പ്രഡിക്ഷൻസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് 19 मिनट्स. आयरोनिकली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप की नंबर 1 टीम रेयरली फीफा वर्ल्ड कप को जीतती है. एक ही बार हुआ ऐसा कि जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले जो फीफा रैंक नंबर 1 कंट्री थी वो जाके अपना फीफा वर्ल्ड कप जीती है, और वो हुआ है ब्राजील के साथ 2002 में. और उनके पास भाई तबाही वाले प्लेयर्स थे. हम बात कर रहे हैं रोनाल्डो वाले एरा की, जहां पे भाई ब्राजीलियंस एज रैंक्ड 1 वेंट ऑन टू विन द फीफा वर्ल्ड कप. और इस बार भाई एटलीस्ट ऑन पेपर 4 ऑफ द बेस्ट टीम्स जा रही हैं फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में. हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की, हम बात कर रहे हैं स्पेन की, फ्रांस की और इंग्लैंड की. ये टॉप 4 टीम्स एटलीस्ट ऑन पेपर दुनिया की 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है जो अभी कंटेस्ट करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में. कौन जीतने वाला है वर्ल्ड कप, कौन सी टीम सबसे ज्यादा फेवरेट्स लग रही है आपको इन इंडिविजुअल मैचेस में? पहला मैच जो है वो है स्पेन वर्सेस फ्रांस का. एक बैटल होगी जो हमने ऑलरेडी पहले कुछ पिछले 3-4 सालों में ऑलरेडी होते देख रखी है. लमीन यमाल वर्सेस किलियन एम्बाप्पे. एंड ऑलरेडी भाई एक फैक्ट ये भी है कि लमीन यमाल एक नॉकआउट मैच में अभी तक किलियन एम्बाप्पे से हारे नहीं. ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं यहाँ पे जूड बेलिंगम के द्वारा लेड इंग्लैंड नेशनल टीम अप अगेंस्ट अर्जेंटीना. भाइयों, जो लोग फुटबॉल को हिस्टोरिकली फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है कि ये मैच नहीं है. डू नॉट मिस्टेक दिस एज जस्ट अ फुटबॉल गेम, बिकॉज भाइयों यहाँ पे हिस्ट्री है, यहाँ पे राइवलरी है और बहुत ही खतरनाक राइवलरी है मेरे भाई. हम बात कर रहे हैं एस्टेका ग्राउंड की, जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था और डिएगो आर्मांडो माराडोना ने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक नहीं बल्कि 2 गोल मार रखे थे. उनमें एक गोल बहुत ही ज्यादा फेमस है जो कि हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, और दूसरा ही गोल उन्होंने मारा 4 मिनटों के बाद, जिसको हम शायद गोल ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं. तो इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना इज गोना बी अ गेम दैट इज गोना फीड दी जनरेशंस. बट इन चारों टीम में से 2 टीम्स होगी जो कि फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आने वाली है. आपकी अर्ली ऑन प्रेडिक्शन
അടുത്ത മാച്ച് മാച്ച് ഓഫ് ദി സെഞ്ചുറി ആണല്ലോ. അടുത്ത മാച്ച് മാച്ച് ഓഫ് ദി സെഞ്ചുറി ആണല്ലോ. മെസ്സിന്റെ പക വീട്ടുവോ മറഡോണ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന്? അല്ല, ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. മറഡോണയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കളിച്ചപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലണ്ടായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് അർജന്റീന കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കളിച്ചിട്ടില്ല അർജന്റീന, പിന്നെ കളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. വിദ്യാമ്മ ജനിച്ചിട്ട് 3 വയസ്സായപ്പോ കളിച്ചതാണ് അർജന്റീന അവസാനമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വരെ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 21 വയസ്സ്, 42 കൊല്ലായി കളിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അതില് കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായ ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എടുത്തല്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ 10 ആൾക്കാരെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടല്ലേ മറഡോണ ഗോൾ അടിച്ചത്. അത് ഗോൾ ഓഫ് ദി സെഞ്ചുറി, മെസ്സിനേക്കാൾ അടിപൊളി ഗോള്. 10 പേരെയല്ലേ കിടന്നത്? 10 പേരെ കിടന്നു. അപ്പൊ ഇല്ലേ, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, മറഡോണ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് മെസ്സിക്ക് പണി കിട്ടുമോന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ? ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് ഇതൊരു റൈവലറി ആണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൈവലറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ. ഏതാണെന്ന് പറയട്ടെ, ഓസ്ട്രിയയും വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയും തമ്മിൽ ഒത്ത് കളിച്ചിട്ട് അൾജീരിയനെ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അൾജീരിയയും ഇവരും കൂടെ ഒത്ത് കളിച്ചിട്ട് 1980 ഓസ്ട്രേലിയനെ അവസാനമായിട്ട് ഇത് തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കളിയില് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തോപ്പിച്ചതായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഒന്നിച്ചു വന്നു അർജന്റീനയുടെ ഗ്രൂപ്പില്. അവർ തമ്മിലുള്ള മാച്ച് അടിപൊളി മാച്ചായിരുന്നു. അവരടിച്ചു, ഇവരടിച്ചു, പിന്നെ അവരടിച്ചു. പിന്നെ 90+3 മിനിറ്റ്സിന് അൾജീരിയ അടിച്ചു. അതിനെ പക വീട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ അത് അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ഓസ്ട്രിയ തിരിച്ചടിച്ചു 90+10 മിനിറ്റ്സിന്. അമ്മാതിരി ഒരു കളിയായിരിക്കും, നോക്കിക്കോ, കണ്ടോ. എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. മാച്ച് ഓഫ് ദി സെഞ്ചുറിയാ വരാൻ വേണ്ടി പോകാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഗോൾ ഓഫ് ദി അല്ല ഗോൾ ഓഫ് ദി മാരഡോണ കളിച്ചപ്പോ ഗോൾ ഓഫ് ദി സെഞ്ചുറി എന്നാ പറയണത്. എനിക്ക് നല്ല കളി ആയിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ ടോപ്പ് 4 തമ്മിലാണ് കളി ഇനി വരുന്നത്. എനിക്കറിയാം അർജന്റീനനെ ഇട്ട് പൊരിക്കും ഇംഗ്ലണ്ട്, ഉറപ്പ്. അവർക്ക് മെസ്സി മറഡോണയുടെ രൂപം എടുക്കണം അന്നത്തെ, എന്നാൽ മാത്രം തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. क्या है, व्हाट डू यू थिंक? अभी तक हमने जितनी भी बात करी है वर्ल्ड कप के बारे में, और हम वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले अपनी प्रेडिक्शन दे रहे थे कि कौन सी वो 4 टीम्स हैं जो कि सेमीफाइनल में आने वाली हैं. आई थिंक वी मोस्टली स्टैंड करेक्टेड. आई थिंक हमने चूज किया था स्पेन को, हमने चूज किया था फ्रांस को. ये 2 टीम्स तो मुझे लगता है कि मोस्टली हम सब ने ये 2 टीम्स को तो बिल्कुल चूज किया था. आई गेस आई वाज आल्सो गोइंग फॉर अर्जेंटीना टू गो इनटू द सेमीफाइनल. तो 3-3 में करेक्ट हो सकता हूं, बट चौथी टीम क्या हमने इंग्लैंड प्रेडिक्ट करी थी. Like were we missing out on the other teams? कोई एक सरप्राइज पिक या फिर कोई एक अंडरडॉग या फिर कोई एक डार्क हॉर्स. मेरा जो प्रेडिक्शन वीडियो था जिसमें मैंने सेनेगल को सेमीफाइनल में पहुंचा रखा था, आई डोंट नो व्हाई इट काइंड ऑफ जस्ट हैपेंड लाइक दैट, पर सेनेगल ने ह्यूजली डिसअपॉइंट किया है. नॉर्वे के पास एक अच्छा शाउट था, अगर वो इंग्लैंड को हरा दे तो नॉर्वे अपना बाई सेमीफाइनल खेल रही होती. जस्ट थिंक अबाउट इट. और एक ऑल्सो बहुत बड़ी टीम है जो मुझे लगता है कि एक मेजर मिसिंग है, वो है कोलंबिया एज वेल. देखिए वेरी क्लोज, और स्विट्जरलैंड ने उनको पेनल्टी शूट आउट में हराया एंड देन स्विट्जरलैंड अल्टीमेटली अर्जेंटीना से हार गई है. तो ये कुछ ऐसी टीम्स है जो कि मुझे लगता है कि could have made it here. बाकी उस साइड से अगर तुम देखोगे यार तो बहुत ही डिफिकल्ट था. मतलब फ्रांस तो आ ही रही थी, फ्रांस को ऐसा कोई ऑपोजिशन मिला नहीं जिनको वो काफी ज्यादा थ्रेटन करेंगे, प्रॉब्लम फील कराएंगे. हमें पराग्वे वाला मैच था ऐसा, बट तुमको पता है पराग्वे बहुत आगे जाने वाली नहीं थी. तो फ्रांस के राउंड में तो फ्रांस ने राउट ही कर दिया है अपने ऑपोजिशन के अगेंस्ट. ऑन द अदर हैंड स्पेन की अगर बात करें तो थोड़े से नियर मिसेस रहे थे
लेंगे। पोर्चुगल वाला मैच थोड़ा क्लोज हो गया था, बट हम सबको पता है स्पेन बेटर टीम है पोर्चुगल से। स्पेन ने 1-0 की सॉलिड विन ली क्लीन शीट के साथ। अगले मैच में स्पेन आती है बेल्जियम के अगेंस्ट। एक ऑब्वियसली एक अच्छा गेम देखने को जरूर से मिला। बेल्जियम ने भी अच्छा फुटबॉल उस मैच में खेला। थोड़े से Introducing Motorola Edge 70 Max. Max every move. Hello, Moto. प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हमने स्पेन को होते देखे। नॉट द बेस्ट कैंपेन येट। एक चीज तो नोटिस करोगे, ये 4 जो भी टीम्स आई हैं फीफा वर्ल्ड कप में, इनमें से तुम अगर फ्रांस को हटा दो ना, हर एक टीम के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। दे आर नॉट लुकिंग देयर बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। हमने स्पेन की बात करी मैच डे के बाद, मैंने रिव्यू में बात करी कि स्पेन में कुछ एक थोड़ी सी खटास है, कुछ एक कमी है, कुछ एक डिफरेंस है स्पेन की टीम में। बट स्टिल डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर वीक टीम, आई एम सेइंग कि शायद ये अपने 5th गियर और फाइनल गियर पे नहीं आ पाए हैं। सेम कैन बी सेड फॉर इंग्लैंड एज वेल, बिकॉज़ जो लास्ट मैच था नॉर्वे वाला, नॉर्वे के मैच के बाद मेरे भाई पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में थॉमस टुकल ने फाड़ दिया, खोल दिया, एंड वहीं पे डिसएग्रीमेंट भी होते हमने देखे। जूड बेलिंगम ने भी कहा नहीं ही डजंट नो व्हाट इट फील्स लाइक टू प्ले इन सच गेम्स एंड व्हाट नॉट। भाई चीजें हुई हैं। सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस जो थी इंग्लैंड की, दैट वाज नॉट गुड। एंड ऑब्वियसली इंग्लैंड के काफी सारे प्लेयर्स इंजर्ड भी थे उनमें, मतलब अब राइट बैक का सिचुएशन भाई प्रॉपर नहीं है उनका। मिडफील्ड में जब से डिक्लन राइस गए तो आपने एक शेयर लैक ऑफ क्वालिटी मिडफील्ड से जाते हुए देखी, जिसको कंपनसेट करने के लिए एलिट एंडरसन, जूड बेलिंगम पिवट में खेल रहे थे और रीस जेम्स बाद में आते हैं पिवट में। तो मतलब काफी सारे प्रॉब्लम्स उनको भी हमको देखने को मिली सेकंड हाफ में ऑल टुगेदर। बट एक चीज इंग्लैंड से मैंने नोटिस करी कि दे नो हाउ टू गेट द विंस। दे नो, जूड बेलिंगम के वर्ड में, दे नो हाउ टू विन डर्टी। तो यार मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं ठीक है, ये सारी दोनों टीम्स है जो कि अपने बेस्ट पे नहीं खेल रही, बट व्हाट दे हैव डन इज गॉट द जॉब डन, सिंपल एज दैट। मतलब बेल्जियम को हराया भाई स्पेन ने और इधर नॉर्वे को हराया इंग्लैंड ने। ऑन द अदर हैंड अगर बात करते हैं अर्जेंटीना की, दिस टीम feels like a bit more chaotic, a bit more vulnerable। काबो वर्दे वाले मैच में हमने देखा, इजिप्ट वाले मैच में हमने देखा, और लास्ट मैच स्विट्जरलैंड वाले मैच में तो हमने देखा मेरे भाई, अगर वो 11v11 होता गेम कहीं भी खसक सकता था। लेट्स नॉट अंडरमाइन अर्जेंटीना बिकॉज व्हाटएवर दे हैव डन अभी तक, दे हैव शोन स्पिरिट, दे हैव शोन द स्पाइन कि भाई हाँ मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, हम कम बैक कर सकते हैं। अगर हम 1-0 डाउन होते हैं, इवन 2-0 डाउन होते हैं, वी कैन फाइट एंड वी कैन ग्रैब द विंस। बट ऑल ऑफ दोज विंस have not been very confident। Convincing wins नहीं आई हैं यहाँ पे अर्जेंटीना की स्टिल भाई, ये हम बात कह सकते हैं। बट एक टीम है इन चारों में से जो कि हराम को ऐसी लग रही है, ये बाप टीम है। एक और चीज मैं तुम लोगों को बता दूं भाई, गोइंग इनटू दिस फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, कि आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि कोई एक फॉरेन मैनेजर एक टीम के साथ फीफा वर्ल्ड कप जीत जाए। देखा जाए तो फ्रांस के पास कौन है? डिडियर डेशॉम्स, फ्रेंच मैनेजर हैं। स्पेन के पास है डी ला फुंटे जो कि स्पेनिश मैनेजर हैं। अर्जेंटीना के पास कौन है? लायोनेल स्कैलोनी जो कि ऑलरेडी एक वर्ल्ड चैंपियन है। भाई यहाँ पे इंग्लैंड के पास है थॉमस टुकल द जर्मन। तो क्या इस एडिशन में हम पहली बार देख सकते हैं एक फॉरेन मैनेजर का एक वर्ल्ड कप जीतना कंट्री के साथ? ये हिस्टोरिक हो जाएगा मेरे भाई। एंड ऑब्वियसली जैसा इंग्लैंड फुटबॉल खेल रही है, दे आर नॉट वेरी कन्विंसिंग, आई विल से दैट, बट भाई ये टूर्नामेंट है, इफ नॉट फॉर किलियन एम्बापे, ये टूर्नामेंट बन रहा है इंग्लैंड के लिए एटलीस्ट जूड बेलिंगम का। पिछले 2 मैचेस से आप अगर आप कह सकते हो कि हैरी केन थोड़ा सा सबडूड है, तो एक बंदा है जो कि ये बंदा ना फोर्स ऑफ नेचर है। इस बंदे को लाइक ऑफ कोर्स हम लियोनेल मेसी की बात करते हैं तो हम गॉड कह देते हैं, हम मैजिक कह देते हैं, हम या आउटवर्ल्डली कह देते हैं, हम एलियन कह देते हैं, हम किलियन एम्बापे कहते हैं तो हम उसको मिस्टर फीफा वर्ल्ड कप कह देते हैं। यू नो, इन बोथ ऑफ दीस टू टीम्स दे हैव गॉट इंडिविजुअल प्लेयर्स जो कि इस बड़े लेवल पे हैव डन दैट, बीन देयर, आर डूइंग इट स्टिल। आप किलियन एम्बापे की बात करो या लियोनेल मेसी की बात करो, इंग्लैंड के लिए इस बार द कन्वर्सेशन इज डिफरेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर इन जूड बेलिंगम जो कि मेरे ओपिनियन इज हैविंग द बेस्ट FIFA World Cup as an Englishman. And I will compare this to the stint of 1986 Gary Lineker, जब वो भाई टॉप स्कोरर बने थे, गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। 1990 में जब हमने पॉल गाजा को देखा था खेलते हुए फुटबॉल, और गाजा क्या फुटबॉल खेले थे, उनकी वो 4th प्लेस फिनिश, एग्जिट हुई थी, वो सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे। वो जो रन था पॉल गाजा का, वो गाजा को एमुलेट करते हुए ये जूड बेलिंगम की मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। मेरे भाई ही इज नॉट इवन अ फॉरवर्ड, दिस गाय इज ब्रेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड मेरे लिए। भाई वो बंदा ऑलरेडी पहली बार तो 3rd हाईएस्ट टॉप स्कोरर बन चुका है इंग्लैंड के लिए फीफा वर्ल्ड कप में। मतलब ही इज डूइंग फीट जो कि बेकहम ने नहीं किया है, जो कि रूनी ने नहीं किया है, जो कि जेरार्ड एंड लैम्पार्ड ने नहीं किया है। ही इज डूइंग एंड मैचिंग, नॉट इन मैचिंग, ही इज बीटिंग दोस
stinks of these world class players. जूड बेलिंगम का ये टूर्नामेंट चला मेरे भाई, वो जो फ्रीक ऑफ नेचर ना, जो कि एवरी एक्शन ऑफ फेज में इन्वॉल्व हो पाता है, चाहे वो बिल्डअप हो, चाहे वो पोजीशन रिटेंशन हो, चाहे वो गोल स्कोरिंग हो मेरे भाई, जूड बेलिंगम इज किलिंग इट. एंड भाई ये क्रेजी बात है कि he being an Englishman has scored the most number of open play goals as an Englishman. And he is not even a striker. मेरे भाई, what Jude Bellingham is doing is कहीं ना कहीं reducing the effort of Harry Kane, जिसका altogether अपना ही बहुत ही बेहतरीन FIFA वर्ल्ड कप चल रहा है. 2018 में ऑलरेडी हैरी केन को गोल्डन बूट अवार्ड मिल चुका था. अभी वो बंदा फिर भी एक गोल्डन बूट के रेस में है. और यहाँ पे जो हम प्लेयर्स देख रहे हैं, किलियन एम्बापे की बात कर लो, लियोनेल मेसी की बात कर लो, हैरी केन की बात कर लो, और उधर जूड बेलिंगम की बात कर लो, ये चारों लोग हैं जो कि गोल्डन बूट के रेस में हैं. डू नॉट फॉरगेट अबाउट द असिस्ट रिकॉर्ड एज वेल, क्योंकि वहां पे ओलीसे भी हैं जो कि असिस्ट रिकॉर्ड में 5 नंबर पे असिस्ट देते हुए चल रहे हैं. तो मतलब आप देखोगे हर जगह से डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो कि डिफरेंट रिकॉर्ड्स के लिए कंपीट कर रहे हैं. मेसी ऑल टाइम लीडिंग वर्ल्ड कप के गोल स्कोरर हैं, ऑल टाइम लीडिंग असिस्ट प्रोवाइडर बन चुके हैं. मेसी ने मोस्ट नंबर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस खेले हैं एंड 2 और मैचेस एंड मेसी कुड प्ले हिज अनदर फीफा वर्ल्ड कप बैक टू बैक ऑल टुगेदर. तो भाई मतलब लाइक ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, इट वाज फिल्ड विद स्टोरीज, फिल्ड विद नेम्स, फिल्ड विद इमोशंस एंड यस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड कंट्रोवर्सीज एज वेल श्योरली, बट वी हैव थॉरली एंजॉयड दैट. एक बात मैं कहूंगा भाई, यहाँ पे ये फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा ना, आई डोंट नो मैं क्या करने वाला हूँ मैं अपनी जिंदगी के साथ, मुझे नहीं पता भाई. अभी जो मैं आज बैठा हूँ ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, खाली डे है मेरा. आई डोंट नो व्हाट शुड आई बी डूइंग एनीमोर. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मैचेस को स्ट्रीम कर रहे होते थे, हम बैठ के 2-3-4 मैचेस देख रहे होते थे. आई फ्रीकिंग मिस द ग्रुप स्टेज मैचेस जहाँ पे दिन में 3-4 मैचेस हो रहे होते थे भाई. होली शिट, अब बच रहे हैं सिर्फ मिला लो तो 4 मैचेस. हमने 100 फुटबॉल मैचेस देख लिए हैं चैट भाइयों बहनों. हमने What's that? Find the song that goes boom fella and play it on Spotify. Oh. Only on Android. फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस देख लिए, 100 मैचेस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं. एटलीस्ट इतना तो मैं कह सकता हूं कि मैंने सारे मैचेस देखे हैं. भैंस की आंख. What has been your best goal, guys? What has been your best goal? Tell me, is it that Cindy Lopez Cabral's goal? Is it that Julian Alvarez goal? Is it that Ismail Assar's goal जो उसने नियाखती की बॉल को चेस्ट डाउन करके गोल मारा था बेल्जियम के अगेंस्ट? What has been your best goal? Is it that Lionel Messi strike जो उसने पहले वाले मैच में मारी थी? Is it that Kylian Mbappe's wonder strike against Senegal? Is it that Schjelderup's goal जो कि नॉर्वे ने मारा था यहाँ पे? भाई, what has been your best goal? क्या वो डेम्बेले का गोल है पिछले वाले मैच में? मतलब इतने सारे गोल बचे हैं कि मैं अच्छे गोल तो मुझे लगता है आधे तो मैं भूल ही गया हूँ. But you have to tell me about that one goal you can't stop thinking about. वो एक गोल कौन सा था? क्या वो मेसी का गोल था जो उस बंदे ने हाफ वॉली में मारा था इजिप्ट वाले मैच में? That was a freak of a goal, right? क्या टेक्निकल प्रोग्रेस थी मेसी की to keep the ball down, crowded है penalty area में. What is that one goal that is still lingering in your head? Chat, let me know, okay? But भाई ये जो 2 मैचेस होने वाले हैं इनके बारे में मैं प्रीव्यू अच्छे से डिटेल में जरूर से करूंगा. But this video was meant to just talk to you about teams जो यहाँ पे आ रखे, एक हल्का सा नॉस्टैल्जिया अबाउट द प्रीवियस मैचेस दैट वी हैव सीन. बट अगर मैं बहुत जनरली बात करूँ आप लोगों से, इन चारों टीमों में अभी तक हु हैज बीन योर स्टार प्लेयर? अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो वुड यू गो विद डायो उपमेकानो, would you go with Olise, या would you go with Kylian Mbappe? Mbappe obviously 8 गोल मार चुका है FIFA World Cup में, nothing to take away from that guy. But do you think there are other players जो कि शायद Kylian Mbappe के लेवल पे वो मैच कर रहे हैं, even उसके नंबर्स ना मैच कर रहे हो? I think case in point है of Olise as well. Olise के ऑलरेडी 5 असिस्ट हो चुके हैं and भाई he is just breaking all sorts of record. वो बंदा जिस ईज के साथ उस ग्रीजमान रोल में खेल रहा है as an attacking midfielder all together, a different role though, but वो बंदा डिफेंसिवली भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है गेम इन एंड गेम आउट. और इस डायो उपमेकानो जो कि बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेल रहा है फ्रॉम द डिफेंसिव पोजीशंस, who would you say कि अभी तक has been the difference maker? I think we don't need to go far away from Kylian Mbappe, isn't it? Like I mean बहुत obvious है ना, मतलब Kylian Mbappe is the guy for France national team, है कि नहीं? बात करते हैं अगर स्पेन की यहाँ पे, who has been the guy for you अभी तक? मतलब obviously this tournament doesn't look like the Lamine Yamal tournament as of now because Lamine still खेल रहा है अच्छा, but उसके एक ही गोल है यहाँ पे. उसके अलावा लमीन का जो वर्क रेट है, लमीन की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो ड्रिबल्स है, उसका जो चांस क्रिएशन है, वो सब हमें दिख रहा है. बट कंट्रीब्यूशन स्टिल हमें लगता है कि और ज्यादा बेहतर इससे हो सकता है. पर आई थिंक जो शाउट आउट मैं जिस बंदे को देना चाहूंगा दैट वुड बी रॉड्री. Again, another international tournament. Again, Ballon d'Or level Rodri is showing up. And भाई this is surprising. Why? Because Rodri का ये जो पूरा सीजन गया है, injury laden था. बहुत लेट वो बंदा रिकवर करके आया था and he still didn't look like himself
और अभी रॉड्री जैसा खेल रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि ये वापस से 2024 का यूरोस चल रहा है. He has de-aged 2 years और रॉड्री is unstoppable. Most number of passes, line breaking passes, aerial duels की बात कर लो, रॉड्री impeccable है, covering every blade of grass, हर एक काउंटर अटैक को स्टॉप कर रहा है. हमने बात करी कि स्पेन ने अभी तक सिर्फ 1 गोल खाया है. We have to also talk about how great of a performance Kubarsi is having as a defender. I think yes, when everything will stop ना, हम look back करेंगे, reminiscing करेंगे, तो हम कहेंगे ओ भाई मेरे कुबार्सी का क्या वर्ल्ड कप गया है यार. टॉप फुटबॉल बंदे ने भी खेला है. और इसके अलावा मिकेल ओयाज़ाबाल, दिलाफून ने कहा कि भाई ओयाज़ाबाल इजीली वर्ल्ड के टॉप 4 बेस्ट स्ट्राइकर्स में आएगा करेंटली. और यह है दिलाफून सेइंग, टॉकिंग अबाउट हिज प्लेयर, एंड ऑब्वियसली पॉइंट इन केस है डेफिनेटली ओयाज़ाबाल, रॉड्री, कुबार्सी, इनकी तुम बात कर लो. आई वुड से कि लेटर रिसर्चर्स जो डानी ओल्मो का रहा है पिछले कपल ऑफ मैचेस में, वो भी बहुत टॉप रहा है. बट मेरे लिए इफ आई हैव टू पिक वन गाय फ्रॉम स्पेन नेशनल टीम, मैं पिक करूंगा रॉड्री को. बहुत ही स्ट्राइकिंगली पावरफुल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली रही है यहाँ पे रॉड्री की. अगर इंग्लैंड की बात करेंगे भाई, तो आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द कैंपेन में ग्रुप स्टेजेस एंड एवरीथिंग, आई थिंक मे बी दैट गाय वाज हैरी केन. बट अभी जैसा हम देख रहे हैं विद 6 गोल्स बैक टू बैक मैचेस में ब्रेसेस, और 2 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैचेस में ब्रेसेस. पहले तो मेक्सिको के अगेंस्ट एस्टेका पे जूडी बॉय, एंड देन फिर कल के मैच में हमने नॉर्वे के अगेंस्ट देखा, फिर से ब्रेस बंदे ने मारी है. तो ये जो 4 गोल पिछले 2 मैचेस में जूड बेलिंगम ने मार रखे हैं, मेरे ओपिनियन में ही इज द गाय जिसको मैं कॉल आउट करूंगा पहले तो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंग्लिश नेशनल टीम के लिए. हालांकि इसके अलावा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है. 120 मिनट कंप्लीट किया एलियट एंडरसन ने दोबारा से. जॉन स्टोन्स ने पिछला मैच खेला है भाई, वो पूरा टॉप फुटबॉल खेला है जॉन स्टोन्स ने, और एक ऐसा बंदा है जो कि 2026 के सीजन में सिर्फ 2 फुल 90 मिनट्स कंप्लीट किया था. सो आई वुड गिव इट टू हिम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गेम. बट आई थिंक बहुत क्लियर है हमारे पास, लाइक जूड बेलिंगम फर्स्ट मैं तो रखूंगा, एंड सेकंड केन, थर्ड पे प्रोबब्ली विल गो विद एलियट एंडरसन हु इज हैविंग अ ब्रिलियंट कैंपेन, एंड मे बी देन विल कम बैक टू सम ऑफ द डिफेंडर्स. मे बी आप गोलकीपर का फिर पिकफोर्ड का नाम ले लोगे. बट आई थिंक ये टूर्नामेंट में जूड बेलिंगम हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर, एटलीस्ट फॉर मी, फॉर इंग्लिश नेशनल टीम. हम जूड बेलिंगम के इस रन को ऑलरेडी पॉल ग्राजा से कंपेयर कर चुके हैं, गैरी लिनेगर से कंपेयर कर चुके हैं, हैरी केन की उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2018 परफॉर्मेंस से कंपेयर कर चुके हैं. मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट जूड बेलिंगम इज डूइंग इज जस्ट होल्डिंग द टीम टुगेदर with that mentality, with that sheer mindset that this guy has already got at just what 21-22 years of age. भाई वो बहुत ही यंग है. और हम आई थिंक लोग हंस रहे थे जो अपार्ट फ्रॉम फुटबॉलिंग वर्ल्ड था, उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि बर्मिंघम सिटी ने एक 17 साल के प्लेयर की जर्सी रिटायर क्यों कर दी. यू नो दैट स्टोरी राइट? बर्मिंघम पे जब ये बंदा खेल रहा था एंड व्हेन ही वाज सपोज्ड टू लीव टू जॉइन डॉर्टमुंड, 17 साल का जूड बेलिंगम की 22 नंबर की जर्सी उन्होंने रिटायर कर दी थी. मेरे भाई, द वर्ल्ड वाज शॉक्ड. The world was shocked कि भाई एक 17 साल के प्लेयर की जर्सी तुम कैसे रिटायर कर सकते हो. मेरे भाई, I think we can see now why they did that. On the other hand, अगर हम अर्जेंटीना की बात करें बेस्ट परफॉर्मेंस की, तो भाई I think there is only one right answer. एक I think 39 years. Oh wait, गलत बोला मैंने. 24 years old, the right winger Leo Messi is the best. Filmora 15 understands your intent, dissolving the space between thought and action with AI. നെറ്റ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് പോയി. ഇന്റർനെറ്റ് പോയി. No internet. What man? What the hell is going on here? Not available. They are saying that. Oh. No Wi-Fi network sound.
കണ്ണ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ സമയം 8 മണിയായി, രാത്രി 8 മണി. നോ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നെറ്റ് പോയത്. വെയിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നെ കണ്ടു തീർക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോയി. എന്ത് കഷ്ടമാണ്. MSCA 15 5G. 17-ാം തീയതി ഒഡീസി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നു സെൻട്രൽ മാളിൽ. 33, 34, 15, 16, 17 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒഡീസി കാണാനായിട്ട് പോകും. എൻ്റെ ടോപ്പ് ഫുട്ബോളിസ്റ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പ് ഫുട്ബോളിസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതങ്ങ് പോയി കിട്ടി. ബാക്കി കേൾക്കാം. Can see now why they did that. On the other hand, अगर हम अर्जेंटीना की बात करें बेस्ट परफॉर्मेंस की, तो भाई I think there's only one right answer. एक I think 39 years. Oh wait, गलत बोला मैंने. 24 years old right winger Leo Messi is the just genre test tracks directly against my footage and move through the editing process a lot faster. guy. I think he's the guy who's carrying the team. There are a bunch of good players carried around by a great legendary player, and that guy is Lionel Messi. तो I think यहाँ पे ये चारों टीमों में से there have been so many good performers. मैं मैकलिस्टर का नाम ले लूँ, मैं परेदेस का नाम ले लूँ, ली चाकोटी रोमेरो का मैं नाम ले लूँ यहाँ पे. Thankfully भाई अर्जेंटीना के number of goal scorers भी slowly बढ़ रहे हैं. There have been different goal scorers for Argentina in the past few matches as well. जो कि मतलब अच्छा लग रहा है कि सिर्फ मेसी नहीं है जो कि कैरी कर रहा है. बंदे ने ऑलरेडी 9 consecutive World Cup matches में गोल मार दिया, another record for him. But भाई in the semi-final everything will be hanging down to a wire. England versus Argentina game में who do you think is going to be the most important player, most crucial player क्या रहेगा? Again मैं फिर 2 लॉन्डो का नाम लूँगा. एक मैं मिडफील्ड में नाम लूँगा, that would be Jude Bellingham. डेफिनेटली भाई ये बंदा इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. और एक और बंदा है जिसको शायद मैं वन ऑफ द डिफेंडर्स को मैं कॉल आउट करूंगा, और एस मे बी आई गो फॉर पिकफोर्ड एज वेल. डू नॉट स्लीप ऑन हैरी केन. ना हम हैरी केन का नाम नहीं ले रहे हैं, ये रीजन नहीं है कि हैरी केन को हम कम आ करें. ऑल ऑफ दीस गाइस आर टॉप, इवन एलियट एंडरसन, डेक्लन राइस उसमें. बट एक बंदा जो मुझे लगता है स्टैंड आउट अगेन बनेगा, भूखा है भाई, वो भूखा है इन लेवल के मैचेस का ना. मतलब जूड बेलिंगम की मेंटालिटी one of the best mentality वाला player at such a young age, Judy boy. I would say कि this guy again difference maker बनेगा. और अर्जेंटीना से मुझसे पता क्या, जब मैं अर्जेंटीना इंग्लैंड का गेम में इमेजिन करता हूँ, मुझे लगता है there could be different players जो कि इस गेम में अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं. obviously मेसी अकेले being the guy as well, but there have to be another players जो कि step up करें. again I'll go with this guy Julian Alvarez. मुझे लगता है कि ये बंदा भी again बहुत important होगा. रही बात स्पेन और फ्रांस की, तो भाई इसमें again I will call some of the midfielders. but इस मैच में क्या करना होगा स्पेन को एक चीज मेक श्योर करनी होगी कि वो फ्रेंच प्लेयर्स के जो अटैकर्स हैं, पैरों पे बॉल कम से कम आने दें. तो जितना कम से कम डेम्बेले, अम्बाप्पे, ओलिसे, बारकोले या डुए, ये जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं 4-5, इनके पैर पे जितनी कम से कम बॉल आएगी उतना ज्यादा चांसेस होगा स्पेन का इस मैच को डोमिनेट करने का. तो इसीलिए अगेन आई गो विद मिडफील्ड ऑफ रोड्री, पेड्री. ये दो बंदे बहुत क्रूशियल होने वाले हैं यहाँ पे. और भाई रही बात फ्रांस की, तो ऑब्वियसली आपको पता है वी आर टॉकिंग अबाउट किलियन एम्बाप्पे एंड बैलन डोर उस्मान डेम्बेले. भाई तो कौन सी टीम जीत रही है, आगे जा रही है? अगर मैं अपनी लास्ट प्रेडिक्शन कर दूं तो गाइस आई थिंक वी आर लुकिंग एट अनदर फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल. मतलब ऑफ द पैड अगर मुझे बेस्ट टीम्स पिक करनी है तो भाई मैं ये 2 टीम पिक करूंगा और एक रीमैच हो जाएगा. द ग्रेटेस्ट गेम इन फुटबॉल एवर जो कि हमने 2022 में देख रखा है, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना हो सकता है पॉसिबली. बट लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ अस मेरे भाई. ना ही इंग्लैंड अपने बेस्ट पे है, ना ही अर्जेंटीना अपने बेस्ट पे है. दोनों टीमों के पास अपनी अपनी दिक्कतें हैं. इट विल कम डाउन टू हु वांट्स इट मोर एट द एंड, हु इज रेडी फॉर दिस एट द एंड. तो भाइयों यहाँ पे तो मैं प्रेडिक्शन तो भाई ऑब्वियसली मैं अपने टीम के फेवर में ही दूंगा. डू नॉट अज्यूम कि यहाँ पे मैं बायस ना हूँ भाई. डेफिनेटली आई विल गो विद माय टीम, बट देयर इज अ गुड केस फॉर इंग्लैंड एज वेल. एंड ऑनेस्टली भाई आई फील लाइक कि भाई इंग्लैंड के पास ज्यादा क्वालिटी है. ओवर 120 मिनट्स लुकिंग एट द प्लेयर्स दैट दे हैव गॉट, लुकिंग एट द मैनेजर they've got more tactical solutions. एंड जिस हिसाब से उन्होंने टफर टीम्स के अगेंस्ट और वैरी टीम्स के अगेंस्ट खेल के रिजल्ट्स ग्राइंड करे हैं, मुझे लगता है कि भाई इंग्लैंड के पास डेफिनेट चांसेस है. एंड यहाँ पे तो मैं थोड़ा उनको ज्यादा बैक करूंगा. मेरे ओपिनियन में इट इज 60-40 इंग्लैंड
to go into the final than Argentina. Saying it as a neutral भाई मैं आपको पहले बता दूं. But on the other hand अगर मैं फ्रांस और स्पेन की बात करूं, सेम चीज मैं फ्रांस और स्पेन में कह सकता हूं. 60-40 फ्रांस again for me. Again ये सब प्रेडिक्शन है भाइयों, इसीलिए मैं इसको सबसे एंड ऑफ द वीडियो पे रखता हूं. But I don't want you to take just this from this video. Let me know about the questions that I already asked you about the difference makers, about the best goals, and yes, obviously for fun अपनी prediction भी दे दीजिएगा मुझे. What is the game that you actually want to see? Now that 4 teams are remaining, what is that final that you really want to see? क्या आप एक finalisima चाहते हो? मतलब फिनिलिज्मा चाहते हो, कहाँ चाहते हो? क्योंकि थर्ड स्पॉट पे भी फिनिलिज्मा हो सकता है, ठीक है? ओ भाई मेरे नहीं फिनिलिज्मा हम चाहते हैं फाइनल में, ये भी तो चाहते हैं हम हो जाए भाई. हाँ, बेबी मेसी वर्सेस रियल मेसी, होली शिट भाई. So many possibilities. All I'll say is good luck to the teams, man. अभी तक फुटबॉल वर्ल्ड कप has not disappointed us. Hope it doesn't. Let's hope for Argentina to go all the way. By being a fan, I will back my team. Let's hope that we get the 4 star on the crest. Wow, let me know thoughts क्या हैं आपके. Thank you for watching. Like करिए, subscribe करिए. मिलता हूँ very soon. Take care and peace out. Disconnected. Connected. അപ്പോൾ ഞാൻ റിവ്യൂ പറയാം. ഇതുവരെ കണ്ട മാച്ചസിൻ്റെ പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടതെന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 20:09 PM ഓഫ് 13 ജൂലൈ 2026. ജൂലൈ 13, 2026 രാത്രി 8:09 PM ആയി സമയം. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ കുറേ മാച്ചസ് കണ്ടതിന് ശേഷം അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാച്ച് ഡേ 2 അവസാനമാണ്. മാച്ച് ഡേ 2 അവസാനം. ഓക്കെ, മാച്ച് ഡേ 2 മാച്ച് ഡേ 2 അവസാനമാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് കണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊളംബിയ വേഴ്സസ് DR കോം മാച്ച് ഡേ 2 ശേഷമാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ജൂലൈ 13 ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞു, സെമി ഫൈനലിലേക്ക് എത്തി 2026 വേൾഡ് കപ്പ്. അപ്പോൾ അർജൻറ്റീന വേഴ്സസ് ഇംഗ്ലണ്ട്, അന്നത്തെ ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോൾ ഓഫ് ദി സെഞ്ചുറി. അപ്പോൾ ആ 2 എണ്ണത്തിൻ്റെയാണ് മെയിനായിട്ട് വന്നേക്കണത്. ആ ഒരു എൻകൗണ്ടറാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് വേഴ്സസ് അർജൻറ്റീന സെമി ഫൈനൽ വന്നേക്കണം. പിന്നീട് ഫ്രാൻസ് വേഴ്സസ് സ്പെയിൻ, കഴിഞ്ഞ നേഷൻസ് ലീഗിലായിക്കോട്ടെ 5-4 സ്പെയിൻ ജയിച്ചായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഏരിയ. അതുപോലെ തന്നെ യൂറോയുടെ സെമി ഫൈനൽ 2024 ഫ്രാൻസ് വേഴ്സസ് സ്പെയിൻ വന്നു. ലാമിൻ യമാൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ലാമിൻ യമാൽ കിലിയൻ എംബാപ്പയുടെ എതിരെ നോക്കൗട്ട് സ്റ്റേജസിൽ ജയിച്ചു. കിലിയൻ എംബാപ്പയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള നടന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ 100 മാച്ചസ് കഴിഞ്ഞു, അതിൽ 52 മാച്ചസോളം ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 25-ാം തീയതിയാണ് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ 24-ാം തീയതിയിലത്തെ വരെയാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് റിവ്യൂ പറഞ്ഞത്. 25-ാം തീയതിയിലത്തെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് വേഴ്സസ് കാനഡയുടെ മാച്ച് കാണും. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് FIFA World Cup.
So whose name is going to be the... ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കളിയുടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് 2-1 കാനഡയോട് ജയിച്ചതാണ്. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് 2-1 കാനഡയോട് ജയിച്ച മാച്ചിൻ്റെയാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്. അത് Well, Canada have broken new ground already at this World Cup. Their first ever point, their first ever win. Well, that's a lovely ball. Embolo, is he onside? Embolo with the chance to bring and save. Larin takes a touch, goes for goal, and forces Nobel into the first real save. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് vs കാനഡയുടെയാണ്. Who finds Ahmad? Jonathan David. നല്ല മാച്ചായിരുന്നു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് vs കാനഡ. As they've done now, looking for Manzambi. It comes all the way through. Vargas with time to take a touch. ഉള്ളിലേക്ക് കട്ടിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓടി വന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കട്ടിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വാർഗാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പ്ലെയർ വാർഗാസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങേരൊറ്റ ഷോട്ട് അടിച്ചു. അപ്പോൾ ഗോളായി. അതാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് 1-0 കാനഡ. Switzerland 1-0 Canada. Switzerland have come to spoil the party. Switzerland 1-0 Canada. At the other end though, Switzerland with Embolo, Manzambi to try and finish it off, and he does. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് റണ്ണ് നടത്തി. സെക്കൻഡ് ഗോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് റണ്ണ് നടത്തി. എന്നിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ബാക്കിലേക്ക് ഇട്ട് വന്നിരുന്ന മാൻസാംബി എന്ന് പറയുന്ന സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പ്ലെയർ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിരുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ. എന്നിട്ട് അയാളൊറ്റ ഷോട്ട് അടിച്ചു മൻസാംബി. അപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് 2-0 കാനഡ. It creeps under Crepo. This is a blistering start to the second half for Switzerland. Miller again gets it in. Fougerolles was lurking. Kobel gets a fist to it. Finds David, who takes a touch. Saliba, lovely touch from Saliba, lovely ball. ഇവിടെ നിന്ന് സലീബ വന്നു. സലീബ എന്ത് ചെയ്തു? സലീബ പൊക്കിയിട്ടിട്ട് സ്വന്തം കാലിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഒറ്റ സൈഡ് കട്ട് ബാക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ത്രൂ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ത്രൂ പാസ് വന്നിരുന്ന ആൾ ഒറ്റത്തേക്ക് ഷോട്ട് അടിച്ചു. What an impact! It's his first touch. Switzerland 2-1 Canada. Switzerland 2-1 കാനഡ. It's lovely. And it's just കാനഡ പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. Numbers forward for Canada. Flicks on. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഗോൾ കീപ്പർ നല്ല രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്തു. Switzerland top Group B. And they reach the knockout stages of the World Cup once again. അങ്ങനെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് 2-1 കാനഡയോട് ജയിച്ചു. അടുത്ത മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ബോസ്നിയ വേഴ്സസ് ഹെർസഗോവിന വേഴ്സസ് ഖത്തറ. ഈ മാച്ചൊന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് ബിസി ആയിരുന്നു. അത് 25-ാം തീയതി തന്നെ നടന്ന. This is Bosnia and Herzegovina against Qatar. So it feels like it's going to be a very busy day. That's a smart turn. It was a long way out, but it was tipping towards the top corner. പുറത്ത് തന്നെ ബോക്സിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ഒരു ലോങ് ഷോട്ട് ഗോളായിരുന്നു ബോസ്നിയയുടെ ആദ്യത്തെ ഗോൾ. The 18-year-old illuminates Seattle, keeping his head while all around him were losing theirs. സെക്കൻഡ് ഗോൾ ബോസ്നിയയുടെ ആദ്യത്തെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റേഞ്ചർ ഒരു ഗോളായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ടാപ്പും ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ടാപ്പും ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അടിച്ചു ഗോൾ. കട്ട് ബാക്ക് കൊടുത്തത് അല്ല, പാസ് കൊടുത്തത് സൈഡിൽ നിന്ന് പെനാൽറ്റി ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു. അപ്പോൾ അത് ബോസ്നിയ 2-0 ഖത്തറിനെ.
Alabegovic has spotted the run of Edinjenko. Can he make it three? It's cut back off the post. And almost back in for a thief. And then Nelson Junior's on self-out. And it's sent to the back of the net. Hassan Al-Haydoum. ഖത്തർ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് കൊടുത്തു, കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഒരു കട്ട് ബാക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. കട്ട് ബാക്ക് അല്ല, ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉള്ളിലേക്ക്. ടാപ്പിനിൽ ഹസൻ മവറാണ് ഖത്തർ പ്ലെയർ അടിച്ചു. അപ്പോൾ 2-1, ബോസ്നിയ 2 ഖത്തർ 1. Afif, something that carving through the posse in midfield. Afif again. This is Pedro. The post again. Here's Afif. Signalling again. Afif. Looking for the angle. Alabegovic from range again. Pedro's only able to half clear. Drilled back in by Mladenic. Still alive, still alive! ബോസ്നിയ തേർഡ് ഗോൾ അടിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നു മിഡിൽ സൈഡ്, പെനാൾട്ടി ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലത്ത് മിഡിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒറ്റ ഷോട്ട് എടുത്തു. ബോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല ഖത്തർ ഗോൾ കീപ്പറിന്. ബോൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ബോസ്നിയ 3 ഖത്തർ 1. ഈ മാച്ചൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് 2 മാച്ചാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു സമയത്ത് നടന്നിരുന്നത്. അത് കാരണമാണ്. ബോസ്നിയ 3 ഖത്തർ 1. ഇനി അടുത്തത് മൊറോക്കോ ഹെയ്റ്റി. അതും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. മൊറോക്കോ ഹെയ്റ്റി മാച്ച്. മൊറോക്കോ 4-2 ഹെയ്റ്റിനെ തോപ്പിച്ചത്. മൊറോക്കോ 4 ഹെയ്റ്റി 2. Off we go. Morocco have eyes on top spot in Group C. Oh, that's good play. Trojak across. Oh, let's go. ഉള്ളിലേക്ക് ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ബാക്കിലത്തെ പാസ്, ബാക്കിലത്തെ കാലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഉള്ളിലേക്ക് ഒറ്റ ട്രിക്കി ഷോട്ട് അടിച്ചത്. ഹൈറ്റി 1 മൊറോക്കോ 0. 52 years. They have waited for a moment like this. Driving on for Morocco. El Khanous can make things happen. El Khanous and Hakimi. Is he going to go all the way here? Maybe. Hakimi's making the move. Here he is. Fouled brilliantly. And Pasic stops it. And coming up, Johnny Pasic. Not once but twice. Oh, Pasic with the stop, and he's going to be forced. ഉള്ളിലേക്ക് ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു മൊറോക്കോ പ്ലെയർ. പക്ഷെ അത് സേവ്ഡ് ബൈ ദ ഗോൾ കീപ്പർ. പക്ഷെ റീബൗണ്ട് കിട്ടി, തല വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ചു. അപ്പോൾ മൊറോക്കോ 1 ഹെയ്റ്റി 1. Hakimi on the line. Captain there where it matters for Morocco. How they needed that. അഷ്റഫ് ഹക്കീമി ഗോൾ അടിച്ചു. Oh my goodness. ഹെയ്റ്റിയുടെ പ്ലെയർ പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒറ്റ ഷോട്ട് കൊടുത്തു. ആ ഒരു ഷോട്ടിലാണ് ഗോൾ കയറിയത്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റി 2 മൊറോക്കോ 1. ഹൈറ്റി നല്ല കളി കളിച്ചു ലാസ്റ്റ് മാച്ചിൽ. അഷ്റഫ് ഹക്കീമി ഉള്ളിലേക്ക് കട്ട് ബാക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മൊറോക്കൻ പ്ലെയർ ഒറ്റ അടി അടിച്ചു. അപ്പോൾ ഗോൾ കീപ്പറിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മൊറോക്കോ 2 ഹൈറ്റി 2. Sabari at the World Cup again. Sabari. Can't be here. Sabari waiting for it. Oh, he's put it wide. It's the movement again. Oh, flicked on Rahimi with the touch. Shot in. അപ്പുറത്തുനിന്ന് കട്ട് ബാക്ക് കൊടുത്തു. ലോങ് കട്ട് ബാക്ക് ആയിരുന്നു. ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഡിഫൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒറ്റ ഷോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക്. മൊറോക്കോ 3 2 ഹൈറ്റി. Soufiane Rahimi. Oh, Pasic. Marcus, oh, is that standing play? It has. Oh, they're going to be in here. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് മൊറോക്കൻ പ്ലെയർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. അപ്പോൾ ഹൈറ്റിയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ വിചാരിച്ച് അയാളുടെ എതിരെ നേരെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക. പക്ഷേ സൈഡിലേക്കൊരു
കട്ട് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലെയർ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് മൊറോക്കോ 4 ഹൈറ്റി 2. ആ കുഞ്ഞു പ്ലെയർ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് പ്ലെയറാണ് മൊറോക്കോയിലെ. ആ പ്ലെയറാണ് ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് പ്ലെയർ, സെക്കൻഡ് യങ്ങസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ കളിക്കണം. അദ്ദേഹമാണ് ഗോൾ അടിച്ചത്, 4ാമത്തെ ഗോൾ. അപ്പോൾ മൊറോക്കോ 4-2 ഹൈറ്റി വീണ്ടും കുറേ അറ്റാക്ക് നടത്തി, പക്ഷേ നടന്നില്ല. മാച്ച് തുറന്നു. മൊറോക്കോ 4-2 ഹൈറ്റിനെ തോൽപ്പിച്ചു. അടുത്തത് ഞാൻ കാണാതിരുന്ന മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് വേഴ്സസ് ഹെയ്റ്റിയാണ് മാച്ച്. സ്കോട്ട്ലാൻഡ് വേഴ്സസ് ഹെയ്റ്റി. ഈ മാച്ച് ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ 2026 ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ നെയ്മറിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് വന്ന ഫസ്റ്റ് മാച്ചായിരുന്നു. നെയ്മറിൻ്റെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ ഡെബ്യൂ ആയിരുന്നു ആ മാച്ച്. ആദ്യമേ തന്നെ ബ്രസീലിനൊരു പാസ് കിട്ടി. ഗോൾ കീപ്പറിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ അടിച്ചു. ബ്രസീൽ 1 സ്കോട്ട്ലാൻഡ് 0. Very humid in Miami. He's used to playing in the heat, but he's given it away. And Vinny Junior's there to make it. സ്കോട്ട്ലാൻഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ ബ്രസീലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കോട്ട്ലാൻഡിൻ്റെ ഡിഫൻഡറിൻ്റെ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് എടുത്തു, ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്തു ആ ബോളിനെ, എന്നിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അത് ഗോളായത്. അത് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് 0, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ 2 ഗോൾ അടിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബ്രസീൽ 2 സ്കോട്ട്ലാൻഡ് 0. അത് ഗോൾ കൊടുത്തില്ല. അത് ഗോൾ കൊടുത്തില്ല. It's above goal and Vinny Junior's there to head it home. Oh my god. ബ്രസീൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു എയർ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എയർ ബോളിൽ നിന്ന് ഹെഡർ ചെയ്തു. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ 2 ഗോൾ അടിച്ചു. അപ്പോൾ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് 0, ബ്രസീൽ 2. The far post. Lovely skill from Vinny Junior. Lucas Paqueta in towards Ryan. It's brilliantly done, and that's a fine save from Angus Gunn. That was nearly an exquisite goal. Tierney's ball in, it's a decent one, and the header. Delicate touch from Paqueta. Lovely patterns, excellent play. Brilliant feet from Guimaraes. Matheus Cunha. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലൂക്കാസ് പക്വേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രസീലിയൻ സ്കോറർ ഇപ്പർ സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്ക് ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അയാൾ ഗോൾ കീപ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു. ഗോൾ കീപ്പറിനെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗോളിലേക്ക് അടിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കും സ്കോട്ട്ലാൻഡ് 0, ബ്രസീൽ 3. Brazil playing the beautiful game. Another decent looking ball from him, and the header down brings the save from Alisson. It was McTominay. Here's a moment many Brazilian fans have been waiting for, but for the first time in a long time, Neymar takes to the field for the Seleção. Brazil come forward again with Vinicius Junior. നെയ്മർ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി മാച്ചിൽ. പക്ഷേ Brazil can counter here with Ryan. He has some support. നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ബാക്ക് ഇട്ടാണ്. It's a comfortable 3-0 win for Brazil on the night, courtesy of 2 first-half goals from Vinicius Junior and 1 in the second half from Matheus Cunha. പിന്നീട് ചെക്ക് 0, മെക്സിക്കോ 3 ആ മാച്ചാണ്. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ 0, മെക്സിക്കോ 3. Mexico can rest easy after winning Group A, but nothing less than a win will do for മെക്സിക്കോ Czechia. 3-0 ചെക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, പക്ഷേ നടന്നില്ല. Pulls it all the way through and just past the far post. And they deal with it well to the overheads. Back in, Clubhouse is a statue. The 3 man is there, punched away by Clubhouse and hooked well to safety.
Can they run there from Krejci again? And the deflection on that effort. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. Krejci back across. Alvarez with a header. That's phenomenal play. Now they've got 3-4 in Mexico and a real chance. Opening goal. ഒറ്റയ്ക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഗോൾ കീപ്പറിനെ കവളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കർലിംഗ് ഗോൾ. മാർട്ടിൻ ചാവസ് ഗോൾ അടിച്ചു. മെക്സിക്കോ 1. അപ്പോൾ മെക്സിക്കോയുടെ ആദ്യത്തെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നു സൈഡിൽ കൂടെ കവളിപ്പിച്ചടിച്ചു. മാർട്ടിൻ ചാവസ് അടിച്ചു, ഗോൾ അടിച്ചു. പിന്നീട് മെക്സിക്കോ അടുത്ത മൂവ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ അടിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾ കീപ്പറിന് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ക്യുനാനസ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്സിക്കോയുടെ സ്ട്രൈക്കർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നു. ഡിഫൻഡറിനും കവളിച്ച് ഗോൾ നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി. അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിന് ഒച്ചോവ കഴിഞ്ഞ 6 വേൾഡ് കപ്പായിട്ട് ഒരേ ഒരു മെക്സിക്കൻ പ്ലെയറാണ് കളിക്കുന്നത്, അതാണ് ഒച്ചോവ വന്നു കുറച്ചു നേരം നിന്നു. അയാളുടെ ഫെയർവെല്ലായിരുന്നു. അയാൾ ആ മാച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്തു. മാച്ച് വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ അവരുടെ ഹോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത്, അസ്റ്റേക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ജയിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുത്തു. അപ്പോഴത്തേക്കും അതാണ് ചെക്ക് 0 മെക്സിക്കോ 3. Guillermo Ochoa has waited for. It is going to happen. While all of the Czechia players in there were together, Jimenez running through the middle. He can wrap it up once and for all. Blocked well by Kovac. Alvarado sets it. In it goes now. ഒരു കട്ട് ബാക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പുറത്തുനിന്ന് ലോങ് ഷോട്ട് അടിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കും ഗോൾ അടിച്ചു. മെക്സിക്കോ 3 ചെക്ക് 0. ഒച്ചോവ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 6 വേൾഡ് കപ്പ് 20 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം കളിക്കുന്ന 2006 വേൾഡ് കപ്പ് മുതൽ കളിക്കുന്നതാണ് മെക്സിക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ചെക്ക് 3-0 മെക്സിക്കോ 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്കോർ ലൈനിൽ കളി അവസാനിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒച്ചോവയുടെ റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്തു. മേളിലെടുത്തിട്ട് കാറ്റിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അതോടെ അദ്ദേഹം റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്തു ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന്. അതാണ് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞത്. Alvaro Vitalo. Full time. Mexico's journey continues. We knew that already, but it's the end of the line for Czechia, who bow out in the group stage. അടുത്തത് കുർസാവോ വേഴ്സസ് കോട്ടഡിയാവോ. ഐവറി കോസ്റ്റ് വേഴ്സസ് കുർസാവോ 0-2 ഐവറി കോസ്റ്റ് ജയിച്ചത്. 0-2 ഐവറി കോസ്റ്റ് ജയിച്ചു കുർസാവോയായിട്ട്. മാച്ച് കാണാട്ടോ. വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടില്ല. Off we go. Morocco have eyes on top spot in Group C. Kursao 0-2 Ivory Coast. Away we go in Philadelphia for Curacao and Cote d'Ivoire. And this is Tahith Chong. Kursao നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. Oh, the ricochet's gone his way. ഓടിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് കുർസാവോ പ്ലെയർ അല്ല, ഐവറി കോസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഓടിക്കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഓടിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഐവറി കോസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഉള്ളിൽ കട്ട് ബാക്ക് കൊടുത്തു, സ്കോർ ചെയ്തു. ഐവറി കോസ്റ്റ് 1 കുർസാവോ 0. Pepe bounces. Cote d'Ivoire have the start they wanted. They're working hard and then Diallo shooting wide. It was acrobatic and a little bit uncomfortable at the same time. Chong, wide. Here's Leandro Bacuna. കുർസാവോ ഐവറി കോസ്റ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഗോളൊന്നും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. Kessie controls and then shoots. ഫ്രാങ്ക് കെസ്സി
And Florana കുർസാവ നല്ല Suarez, രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു not too കുർസാവ, far away പക്ഷെ for ഗോളൊന്നും അടിക്കാൻ Curaçao. പറ്റിയില്ല. Sangare, they found a way through and they found a ഉള്ളിലേക്ക് second കട്ട് ബാക്ക് goal. കൊടുത്തു, ഉള്ളിലേക്ക് ക്രോസ് കൊടുത്തു, ത്രൂ ബോൾ A കിട്ടും, brace for Pepe, a താഴ്പ്പിച്ച് wonderful കൊണ്ട് കർലി finish. കോർണർ And അടിച്ചു. now Cote d'Ivoire കുർസാവോ really 2 can think അല്ല about the round കോട്ട് of ഡി ഐവർ 2, 32. ഐവറി കോസ്റ്റ് 2, കുർസാവോ 0. On the Localia day off, Curaçao. കുർസാവോ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, പക്ഷെ ഐവറി കോസ്റ്റിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു. മാച്ച് കുർസാവോ 2-0 അല്ലല്ല 2-0 ഐവറി കോസ്റ്റ് കുർസാവോയുടെ എതിരെ 2-0 ജയിച്ചു ആ മാച്ച്. Gone all the way through. They might have another one. And the referee blows his whistle. Cote d'Ivoire, for the first time in their World Cup history, are through to the knockout stages. We are underway in the സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക spectacular വേഴ്സസ് കൊറിയ Estadio Monterrey. റിപ്പബ്ലിക്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കൊറിയ Right on the റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ Dennery, headed down by the തോപ്പിച്ചു. captain and blocked on സൗത്ത് the ആഫ്രിക്ക line. ജയിച്ചു. Will the chance open up? The deflection sends it away from the goalkeeper. മിനിഞ്ഞാന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോർദൻ ഹെയ്ഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട രീതിയിൽ കണ്ടെത്തി. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വേൾഡ് കപ്പിൽ അപ്പിയറൻസ് നടത്തിയ 25 വയസ്സുകാരൻ. ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് വേഴ്സസ് നോർവേ മാച്ച് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത്. ആ ഒരു ഇത് അത് ഈ മാച്ചിൽ കളിച്ച ആളായിരുന്നു. Chance may open up here. സൗത്ത് കൊറിയ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക വേഴ്സസ് സൗത്ത് കൊറിയ മാച്ചായിരുന്നു. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക വേഴ്സസ് സൗത്ത് കൊറിയ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. Touch from Apollos, sent forward by Mofoke, and a huge chance for South Africa, and an even bigger. Apollos goes for goal himself and straight into the chest of the Korea Republic keeper. Maseko shrugs off the pressure, keeps driving forward, runs into traffic, lays the ball off. It's a big save, and it's a huge second save. South Africa But the goal might go the way of South Africa here, who strike from distance. And a golden opportunity for Maseko once again. Big block. And then maybe another secondary moment here as the ball's passed up to Castro. And the header is there, but it's well saved. South Africa trying to find a way forward. It's fallen once again to Maseko! സൈഡിലേക്ക് കട്ട് ബാക്ക് കൊടുത്തു. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലെയർ പെനാൽറ്റി ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വൺ ടച്ചിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു. അപ്പം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക 1-0 കൊറിയ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ തോൽപ്പിച്ചു ആ മാച്ചിൽ. And this time it sticks! Tap down. Bassett sends it away. സൗത്ത് കൊറിയ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു മാച്ചിൽ, പക്ഷെ From the depths of despair, South Africa qualified for the South Africa, knockout rounds South for the Korea first time in their history. പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ട മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാഡോർ വേഴ്സസ് ജർമ്മനി മാച്ച്. ഇക്വാഡോർ വേഴ്സസ് ജർമ്മനി മാച്ചിൽ ജർമ്മനി ആദ്യമേ തന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി. ജർമ്മനി വേഴ്സസ് ഇക്വാഡോർ മാച്ച് ഇക്വാഡോർ ആദ്യമായിട്ട്